Hello guys, welcome back. Myself Manish Mittal from SURAJ Secondary School, Mahendra. Dear student, today I will discuss with you topic balance sheet. As per Schedule 3 of the Company Act 2013, now balance sheet format change, and now we never use horizontal format. Now we use only vertical format of the balance sheet, and for this it is the format. First one, name of the company, balance sheet as a date, the date on which we are making the balance sheet, particulars, note number, figure at the end of the current reporting period, करंट ईयर के जो डाटा है वो इस कॉलम में लिखे जाएंगे, फिगर एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग ईयर, जिस साल क्या बना है, पिछले साल के जो डाटा है वो नेक्स्ट कॉलम में लिखे जाएंगे. Dear students, now in vertical shape there are two sides. First is the equity and liability, and second is the assets. First of all, I am discussing with you equity and liability side. Equity and liability. Equity and liabilities. Dear students, there are 4 head for the equity and liability side. First one is shareholder fund. First one is shareholders fund. Second is no share application money pending allotment. Share application money pending allotment. Application money pending allotment. Pending allotment. Third is non-current liability. Third, non-current liability. Fourth is current liability. Fourth is current liability. Fourth is difference current liability. Current liability. यहाँ पे जब लाइबिलिटी यूज कीजिए. इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड के लिए स्टूडेंट 4 हेड्स हैं. पहले है शेयर होल्डर फंड, सेकंड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड है नॉन करंट लाइबिलिटी एंड फोर्थ इज करंट लाइबिलिटी. स्टूडेंट्स, शेयर होल्डर फंड को हमने 3 सब हेड में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट वन इज शेयर कैपिटल, सेकंड इज रिजर्व एंड सरप्लस. डियर स्टूडेंट्स, आप जो कंप्लीट 2013 के अनुसार आपको पहले क्या था कि हम सभी चीजें अलग अलग दिखाया करते. अब सभी चीजें क्या तो हेड के अंदर आएंगी, क्या सब हेड के अंदर आएंगी. जैसे जितने भी रिजर्व्स हैं वो सारे नोट टू अकाउंट बनेगा, वहां पर उनका टोटल जो आएगा वो रिजर्व सरप्लस हेड में आएगा. शेयर कैपिटल की जितनी भी एडजस्टमेंट है सब आप करेंगे कहां पर, नोट टू अकाउंट में, यहाँ पर इसका टोटल आएगा. और थर्ड इसका होते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. शेयर वारंट्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसके कोई सब हेड पर हम डिस्कस नहीं करेंगे. नॉन करंट लायबिलिटी, इसके 4 सब हेड हैं. ये स्टूडेंट इसके 4 सब हेड हैं. पहला सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग. एनी बोरोइंग विच आर पेमेंट आफ्टर 12 months. Any loan which are payment after 12 months shown in the long term borrowing. Next, deferred tax liability. Deferred tax liability ये क्या चीज है, इसके बारे में बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. Deferred tax liability. थर्ड है अदर नॉन करंट लायबिलिटी.
अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, ये आपका थर्ड पार्ट है। एंड फोर्थ पार्ट, फोर्थ सब हेड इज, डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ सब हेड इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसके बाद जो आपका चौथा हेड होता है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। इसके भी स्टूडेंट्स चार सब हेड हैं। पहला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। दूसरा सेकंड है ट्रेड पेबल, थर्ड है अदर नॉन करंट लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटी। फोर्थ इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। here total dear students, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के चार हेड है। फर्स्ट इज शेयर होल्डर फंड, सेकंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड इज नॉन करंट लायबिलिटी, फोर्थ इज करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड हैव थ्री सब हेड, फर्स्ट इज द शेयर कैपिटल, सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये हेड आपके सिलेबस में नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी, इसके भी फोर सब हेड है। नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नेक्स्ट इज करंट लायबिलिटीज, इसके भी चार सब हेड है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, अदर करंट लायबिलिटीज and short term provision. Now I am discussing with you asset side. Now I am discussing with you asset side. Dear students, in vertical format, just after the equity and liability side, we will create asset side. There are two head in the asset side. First is the non-current assets. First is the non-current assets. Other is the current assets. Other is the current assets. First non-current assets. Second is the current assets. Second is current assets. Non-current assets now divided into the five subhead. First is the fixed assets. Number one, fixed assets. Number one, fixed assets. Number two, non-current investment. Non-current investment. Non-current investment. Number three, deferred tax assets. Deferred tax assets. Number four, long-term loans and advances. Long-term loan and advances. Loan and advances. Number five, other non-current assets. Other non-current assets. Non-current assets have five subhead. First is fixed assets, second non-current investment, third deferred tax assets, fourth long-term loans and advances, fifth other non-current assets. Fixed assets also divided into the four parts, but ये भी बड़े 4 हिस्सों में बटी हुई है, जिसमें से केवल दो ही आपके सिलेबस में है। दो आपके जो सिलेबस में नहीं है उन पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इसके दो पार्ट बने हुए हैं। फर्स्ट वन इज टेंजिबल fixed assets. Second is
intangible फिक्स एसेट्स, यही तो आपके सिलेबस में है। इसके अलावा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये दोनों आपके सिलेबस में है, जो इसलिए मैंने उनको राइट डाउन नहीं किया है। करंट एसेट्स अगेन डिवाइड इनटू द 6 पार्ट। फर्स्ट वन इज करंट इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट वन इज करंट इन्वेस्टमेंट, सेकंड इज इन्वेंट्री, second is inventory, third is trade receivable, fourth is cash and cash equivalent, fifth is short term loans and advances, and sixth is other current assets. After it we will make the total of asset side. Dear students, assets side have two head. First is the non-current assets, other is the current assets. Non-current assets again divided into the 5 parts, 5 subhead. First one is fixed assets, non-current investment, deferred tax assets, long-term loans and advances, other non-current assets. Current assets again divided into a 6 subhead, current investment, inventory, trade receivable, cash and cash equivalent, short-term loans and advances, other current assets. Here fixed assets have four divided into 4 parts: tangible fixed assets, intangible fixed assets, capital work in progress, intangible assets under development. लेकिन इसमें लास्ट तो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने उनको लिखे नहीं है। tangible fixed assets, intangible fixed assets. Total of equivalent liability side and asset side will be equal. Dear students, I hope you understand it. If you understand it, then like and subscribe our YouTube channel. Thank you. Have a nice day.